Hello children, good morning all of you. Lastly, I explained you regarding market and its features. In this part, I am going to explain you perfect competition. Now let's try to understand exact meaning of perfect competition. So perfect competition exactly what? So perfect competition market is an ideal market. It is only possible theoretically, means its practical importance is not there, only the theoretical importance is there. Is it clear? Not practically, except the agriculture sector. This market is rarely observed because the term for establishing perfect competition are not made that easily. In economics, the study of perfect competition is very important, as this help in understanding the characteristics and behavior of the market based on monopoly, monopolistic competition and oligopoly. Means if you will understand the concept of perfect competition, then it become easy to you understand the situation of the market, monopolistic market and oligopoly. So let's try to understand the definition which is given by the different economists. First, Mrs. Robinson, she is saying that perfect competition exists where the demand of product of the producer totally depend on the price. Means it is a market where commodity its selling is purely depend on price, and there you can see the perfect competition. Okay. According to Professor Leftwich, he is saying that perfect competition is a market system where there are many firms that sells distinct product with not perform large enough that can influence the market price. Means so many firms are there, but nobody is there which has that much capability to influence the market. Okay, now what are the features, means the characteristics of perfect competition? Let's try to understand it. So first features of perfect competition is that numerous buyers and seller. The meaning of numerous buyers and seller is that there are many buyers and many sellers. This market has large number of buyers and seller of these numerous seller. A single seller is a very small part of the market. Means market is so large that one single cannot influence any kind of activity of market, or he is not able to manipulate the market situation or circumstances, due to which he cannot control or monopolize the wholesale market, neither can he influence the market price. Means he is not in a situation that he can influence the market or he can influence the price in the market. In a wheat farm, the increase or decrease in production of a single farm will not affect the total production of the wheat. Beginning of thus being a very small part of market, the seller cannot influence the market. Similarly, buyer also are numerous, so many buyers are there, and suppose two or three buyers or a group of buyer will remove from the market, then also, or they move the market, or they will left the market, then also it will not influence the market its situation. Therefore here the market price depend only the factors like demand and supply, not other factors are influenced. The next characteristics is children, that is identical product. The meaning of identical product is, means the product are homogeneous. The meaning of homogeneity means their size, their shape, their color, their features, it will be same. You move in any markets. I am giving you one example. Suppose you purchase the pouch of Amul milk, means Amul Taja.
Okay, and if you go any milk parlor where the selling of Amul is there, so you will get the same kind of product. There will no change at all. So that is called the identical product. Okay, so same kind of product you will get, and this is the second features of perfect competition. Next feature is free entry and free exit, means there is no restrictions to the firm. If they want to start their business, nobody is there to stop them or check them, and if they want to wind up the business, nobody will influence that. Similarly, same condition is applied to buyer also. If they want to move from the market, they don't want to purchase the good, nobody will influence them. And suppose they want to purchase the goods, then also nobody will influence. So free entry and exit is the characteristics of perfect competition, and it is seen temporary time period. For a very short time, the firm enter in the market being attracted by the profit and exist from the market suffering loss. But for a longer period, if the market is in a situation the normal profit, there is a less movement of firm, because when industry reaches at a normal profit, there is no attraction or gain higher profit. And in the case of normal profit, the firm does not exist in the market, means if firm is getting the profit, then there is no question to exist from the market, means they will remain continue in the market. Next, this is the most important concept, third features of perfect competition. It is perfect knowledge of the market, means when buyer is going to purchase the commodity in the market, he must have the perfect knowledge of the market, means price, quality, quantity. If he is not aware by that, there may be chances that he will be cheated by the seller. Sorry, actually I am not feeling वेल टुडे, मुझे आज बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे ये शूट करना है, दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस चिल्ड्रन। बराबर है, मेरी यार तबीयत सुबह से जो है अच्छी नहीं है, 2-3 बार वॉमिटिंग हो चुकी है, लेकिन आप लोगों के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड आई एम फुलफिलिंग दैट। इज इट क्लियर? Okay, so next is the perfect knowledge in the market. Okay, the producer, buyer, seller have the complete knowledge of the market, including product availability or product price, etc. The producer or seller are in knowledge in the price at which the other producers or seller are selling the product. They are also aware about the quality of the identical or substitute goods. You know very well, substitute goods. ओके, एक के बदले में दूसरा, कॉफ़ी के बदले में चाय, और यू कैन से द पेप्सी के बदले में कोक, दैट इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूट. ओके, thus in this market the seller cannot charge different price or identical product. The buyer also know the price of the product and its quality, so that the seller cannot demand different price from the firm. Means buyer must aware about the product, whatever material you will get the one particular price in one shop, the same kind of product you will get the another, there will be no difference in the price. Suppose एक ब्रेड की कीमत एक दुकान में अगर 30 से 35 रुपए है, तो दूसरे दुकान में भी वही भाव मिलेगा आपको. ब्रांड सेम होना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इज इट क्लियर? Next, mobility of factor of production. Okay, this is the another features of perfect competition. You know, there are 4 factor of production, that is the land, labor, capital and enterprise, and all are dynamic and easily mobile. Okay, so in perfect competition the price is same and identical. Similarly, the price of the factor remains same, their price is not change. Means land ka jo rate it will remain constant, labor will remain constant, and capital, its return interest will remain constant, and profit also be constant too. Refer from shifting of compensation from law, the high due to the dynamic and mobile nature, the production equipment and firm are uniformly compensated. Next is no transportation expense. There are the numerous buyer and seller in perfect competition. The expense of
transportation are nominal as compared to the total expense, so are not counted. Thus, the considering the transportation expense to be zero make this important characteristics of perfect competition. So you here understood by different way what is exact sense of perfect competition. आपको बेसिकली तीन चीज़ें तो यहाँ पे याद रखनी है. पहला यही याद रखना है, मैनी बायर मैनी सेलर. बहुत सारे बायर होंगे, बहुत सारे सेलर होंगे, और वो जो है किसी भी तरीके से मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं. प्रोडक्ट आइडेंटिकल होंगे, यानी होमोजिनिटी देखने को मिलेगी आपको, बराबर है, और प्राइस उनके एक जैसे रहेंगे. नेक्स्ट, किसी भी फॉर्म के आने या जाने से, बराबर है, और मार्केट को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, एंड दैट इज़ द फ्री एंट्री एंड एग्जिट. इतना ये तीन पॉइंट तो आपको बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन को लेकर क्लियर होने चाहिए. इफ समवन विल आस्क यू द फीचर्स, देन एटलीस्ट यू शुड नो दिस थ्री फीचर्स. Numerous buyer, numerous sellers means many buyer, many sellers. Product are homogeneous means identical product. And next, free entry and free exit for both buyer as well as seller. Is it clear? Your next part, that is the monopoly. Mono means single, poly means you can say right, adhikar. Okay, in Hindi and Gujarati it is called ekadhikar, means when one firm influence, or you can another word hijack the entire market situation, then that is the subject of monopoly. Okay, अगर हम लोग यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, नाउ नेक्स्ट वन इज योर चिल्ड्रन मोनोपोली. अगर हम लोग यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम लोग बात करें, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि मोनोपोली जो है एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर वन सिंगल बायर इन्फ्लुएंस द वन सिंगल सेलर इन्फ्लुएंस द एंटायर मार्केट. इन अनदर वर्ड यू कैन से उसकी मार्केट में तूती बोलती है. इज इट क्लियर? अगर वो मार्केट में से खिसक जाए तो पूरा का पूरा मार्केट अप एंड डाउन हो जाएगा, एंड दैट सिचुएशन इज कॉल्ड द मोनोपोली, एकाधिकार. अब मोनोपोली अलग अलग टाइप की हो सकती है. नेचुरल मोनोपोली हो सकती है, गवर्नमेंट मोनोपोली हो सकती है, एंड देर आर ऑल्सो अनदर पैटर्न ऑफ मोनोपोली. ओके, तो मोनोपोली अलग अलग टाइप की आपको जो है देखने को मिल सकती है. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू वन बाय वन. लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ फर्स्ट द मीनिंग ऑफ मोनोपोली. वैसे तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बट इट इज़ एग्जैक्टली एंटी ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. ओके, द इकोनॉमिक कंसिडर द परफेक्ट मार्केट एंड मोनोपोली एज टू कंप्लीटली अपोजिट थियरी. मैंने पहले बोला ये एग्जैक्ट एंटी है, मोनोपोली का एग्जैक्ट अपोजिट है. मोनोपोली इज द इमेजिनेटरी कंसेप्ट, बट द मोनोपोली ऑब्जर्व्ड इन रियलिटी इन परफेक्ट मोनोपोली. मोनोपोली होती है बच्चों, बराबर. मैं आपको भी एग्जांपल दूंगा, भले आपके बुक में जो है इन लोगों ने उसको इमेजिनेटरी कंसेप्ट बोला है, बट इन प्रैक्टिकल सेंस देयर इज मोनोपोली. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. Monopoly is originated from Greek word mono means the single and polyon means the seller. Seller means the power who control the market. Is it clear? So monopoly means market having one seller. अब आप लोग बोलोगे सर ऐसा तो कभी होता है क्या? यस. अगर आप जो है अपने इंडिया में, अगर इंडिया की लाइफलाइन अगर आप बोलो इंडियन रेलवे, क्या उसका कोई सब्स्टिट्यूट है? तो यहाँ पर किसकी मोनोपोली है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मोनोपोली है. दैट इज द मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सिमिलरली आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा ओपेक. ये जो है ऑयल प्रोड्यूस करने वाले कंट्रीज लोगों का ग्रुप है. ये मार्केट में नक्की करते हैं कि ऑयल का प्राइस कितना रखना है, तो ये उन लोगों को मिली हुई मोनोपोली है, बराबर है. सिमिलरली सर्टेन मिनरल्स जैसे अभ्रक जैसी चीज़ें हैं वो इंडिया में ही मिलती है और दूसरे पार्ट में जो है वर्ल्ड में ईजीली नहीं मिलती है. तो यहाँ पर इंडिया की जो मोनोपोली है दैट इज़ द नेचुरल मोनोपोली. सिमिलरली क्रायोलाइट जो है
वो ग्रीनलैंड में ही मिलता है, कहीं और नहीं मिलता है, तो वो जो है दैट इज़ द नेचुरल मोनोपोली। तो इससे अलग अलग टाइप की मोनोपोली होती है। लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन नाउ। प्रोफेसर चैम्बरलिन बोलते हैं when the product supply is collected only by a single enterprise, means when entire market is controlled and influenced by single one, though that is the subject of monopoly. प्रोफेसर स्ट्रिगलर बोलते हैं ओनली वन enterprises in the seller of the goods is product. Okay, and that is your monopoly. And what are the characteristics of monopoly? The first feature of monopoly is that only one producer or seller and numerous buyer, means single seller and so many buyers are there. There is only one seller of producer of the product and goods who control the supply of the product. There is no competition in the market, means no rival firm is there in the market. There is only seller allowing the seller of the product and control the price in the product. The producer or the seller can decide the price of the product. So no, the price maker of the market, means the seller is a price maker. Is it clear? He is not price taker. When there are countless buyers in the market, the importance of the single buyer become negligible. There is competition seen between the customer in monopoly. The buyer thus cannot affect the price of the product, means buyer he is not influence the product. Next, absence of substitute goods, means whatever is available there you have to purchase that only. There is no substitute of good of that commodity. बेस्ट एग्जाम्पल बराबर है, अगर आपको ट्रेन से यात्रा करनी हो तो ट्रेन का दूसरा कोई सब्सिट्यूट नहीं है। बस आप बोलोगे तो बस उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है भाई, सब्सिट्यूट नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? ठीक है, क्योंकि ट्रेन में मिलने वाली जो फैसिलिटीज़ हैं दैट ऑल फैसिलिटीज़ यू आर नॉट गेटिंग इन बस। इज इट क्लियर? तो सब्सिट्यूट मिलना बहुत मुश्किल है, वो एक ही चीज़ पूरे मार्केट को कंट्रोल करती है। जो बेस्ट एग्जाम्पल आप लोगों को दो कि अगर आप दिल्ली जाते हो और अगर आप मेट्रो को चूज़ करते हो तो मेट्रो का दूसरा कोई सब्सिट्यूट नहीं है वहाँ पर, बराबर है। अब आप बोलो मेरे को रास्ते से जाना है तो हाँ, वहाँ पे आपको सब्सिट्यूट मिल सकता है कि भाई ऑटो रिक्शा की जगह पे आप टैक्सी चूज़ कर सकते हो, बराबर है। टैक्सी की जगह पे आप जो है बस चूज़ कर सकते हो, तो वहाँ पर है, वहाँ पे आपको ऑप्शंस हैं, लेकिन मेट्रो का आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। आई वॉन्ट टू से दैट। सो एब्सेंट ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स। सिमिलरली अगर आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में देखो कि जो गाड़ी आपकी जो है पेट्रोल से चल रही है तो वो अगर कोई भी भाव हो, यू टू परचेज दैट, यू कांट रिफ्यूज़, मना नहीं कर सकते हो भाई कि भाई मुझे मैं नहीं इसको जो है, हाँ बोलोगे मैं सीएनजी किट फिट कर लूँगा, सीएनजी उसका सब्सिट्यूट है। इज इट क्लियर? लेकिन मोनोपोली में उसके लिए कोई स्पेस नहीं है। ओके, so there is an absent of substitute goods in monopoly, but it is in reality there is in perfect monopoly there is an absent of ignorance of the close substitute. फिर से याद रखना ये वर्ड, close substitute. There may be a rare possibility of the similar product available. For example, if while buying the railway ticket from the specific company from a specific time to a specific location, the ticket is unavailable, then there is no possibility to having the similar substitute ticket to the location, but one can try the possibility of traveling by the aeroplane in the same time to the same location. Most important thing, there is a restriction of एंट्री टू न्यू फॉर्म। कोई भी नई फॉर्म मार्केट में आ सकती नहीं है, उसका जो कॉम्पिटिटर है उसे आने ही नहीं देगा, उसे जो है वहाँ पे खड़े ही नहीं होने देगा। आप लोगों को बताऊँ मैं, जब तक इंडिया में लिबरलाइजेशन नहीं आया था तो दूरदर्शन के अलावा दूसरा कोई चैनल ही नहीं था, उसकी मोनोपोली चलती थी। तो नए फॉर्म को एंट्री मार्केट में नहीं है, एक ही फॉर्म पूरे मार्केट को मोनोपोलेट करेगा। देयर आर द डिफरेंस
form of monopoly to make the monopoly means existence of only one seller. It is possible to end the monopoly but being a difficult process. बराबर, बहुत ही चैलेंजिंग है. The seller can sustain his monopoly for a long duration due to the absent of competition. आपको और जगह की बात छोड़ दो, हलोल की अगर हम लोग बात करें, आज आप लोगों को हलोल में आइसक्रीम में जो है आपको परफेक्ट कंपटीशन का माहौल देखने को मिलता है. लेकिन एक टाइम था जब महावीर की मोनोपोली चलती थी. बराबर है. ही वॉज द प्राइस मेकर. वो जैसा चाहता था उस भाव में जो है बेचता था. वो बात अलग हो गई, टाइम बदला, दूसरे और नई फॉर्म मार्केट में आई, लेकिन उन नई फॉर्म को चैलेंज तो फेस करना ही पड़ा, क्योंकि जो पुरानी एग्जिस्टिंग फॉर्म है वो दूसरों को जल्दी से मार्केट में एंट्री करने देती ही नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है अगर ऐसा करेंगे तो उनका जो दबदबा मार्केट में है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा. इज इट क्लियर? तो ये आपको समझने की ज़रूरत है. ये मैंने इसलिए आपको लोकल एग्जांपल दिया कि आप इसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सको, क्योंकि आज भी अगर आप किसी को बोलो कि भाई आइसक्रीम, वो इमीडिएटली बोलेगा महावीर. इज इट क्लियर? सो मैं किसी की एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, बट आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल. इज इट क्लियर? आज बहुत सारे दूसरे कॉम्पिटिटर उसके अगेंस्ट में खड़े हो गए हैं, लेकिन एक ज़माने में जो है उसका दबदबा था. इट वॉज हिज मोनोपोली. इज इट क्लियर? Even though there is a supernormal profit due to the monopoly, the other firm can not easily enter the market. The monopoly restrict newer firm by factor like. तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा. नेक्स्ट, कंट्रोल ओवर द प्राइस और सेल्स. ठीक है, जो भी सेलर है वो अपना जो है मार्केट में दबदबा बना के रखता है, वो प्राइस के ऊपर टोटल कंट्रोल रखता है. इज इट क्लियर? द गेन मैक्सिमम प्रॉफिट. सेलर कंट्रोल द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट, बट सेलर कैन नॉट कंट्रोल बोथ द प्राइस एंड द सेल्स. ओके, टू सेल लेस यूनिट प्रोडक्ट द फर्म सी द हायर प्राइस, while to sell the more unit to sell the less or firm set a higher price, while to sell the more unit the product of the firm must set lower price of the product. To see large number of unit of product with high price is not possible. फिर है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. मोनोपोली बच्चों एक बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट इंजॉय करती है, क्योंकि उसको कोई कॉम्पीट करने वाला नहीं है. सो इन मोनोपोली मार्केट product and seller at the same time, seller can gain the super profit without any competition. The both shorter and longer time period, the seller can put the higher price on the product as compared to the total expenses, thus gaining super normal profit. Next, price determination. He is the price maker. Seller is the price maker. Okay, he whatever price he will decide. Buyer is compulsory, if he needs the product, compulsory he has to purchase in that price only. Due to the absence of any competition, the seller can set different price on the same product depending on its use of the firm. The seller thus can gain higher profit using the concept of price discrimination. Okay, so many times one example, a doctor is given here, you know that very well. There is no need to explanation regarding this. Firm is industry, means industry itself is a firm. Okay, and firm itself is a industry. So ideally the firm is the independent unit of production, while the industry is a collection of the firm producing the product. However, in monopoly, producer and the seller are same, so the collection of firm can also be considered in a single firm. Is it clear? So this is your monopoly. Now next one is your monopolistic competition. Now monopolistic competition and oligopoly we will see in next lecture. Okay, bye, see you all.